Assalamu alaikum student. Today we will start a new topic, that is concept of accounting and the conventions and principle. As we have studied in the earlier videos, meaning, meaning, objectives, distinguish between and the different terminologies of accountancy. Now we will move on the next topic, that is concept of accountancy. Accountancy is means of communicating the result of business operation to the various parties, to the owners, creditors, investors, bankers, or the financial institutions. Accounting is not only to associate with business but also with the everybody. अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस से रिलेट नहीं होता है, बल्कि सबसे रिलेट करता है जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, कस्टमर से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. ओके, सो जनरली द टर्म अकाउंटिंग refers to financial information or financial accounting, and bookkeeping and accounting is an art of recording, classifying, summarizing and transaction of business concern in systematic manner. This much we know very well. Now the various concepts which is required for the accountancy, that is essential for the every business organization, that is to give the reliable information, uniformity in presentation and measurement of all acceptable basis, proper information to all, valid appropriate assumptions. So these are the accounting concepts we have to see. Now in that we have number of accounting concepts, some more important accounting concept. Very first accounting concept is business entity. We have number of accountancy. We have number of accountancy concept in that: business entity, money measurement, accrual, matching concept, going concern, cost concept, realization concept, dual aspects, conservatism, consistency and materiality. One by one we have to study, we have to see what is all these concepts related with that, and what is the meaning of money measurement, what is the meaning of accrual, meaning of cost, and we have to study about each and every concept in detail. Okay students, now very first business concept is business entity. Accounting concept, in that we have to see business entity. What is business entity? Let's see. This concept implies the business unit is separate and distinct from the owner or the person who supply the capital to it. Based on this concept, accounts are prepared from the point of view of the business and not from the owner's point of view. Hence, the business is liable to the owner for the capital contributed by him or her. But according to this concept, only business transactions are recorded in the books of accounts. Personal transactions of the owner are not recorded. But the transaction with the business, such as capital contribution to the business, cash withdrawn from the business for the personal use, will be recorded in books of account. It implies that business itself owns the assets and owes the liabilities. Means के बिजनेस एंटिटी, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों भी जो चीज़ें डिफरेंट है. बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेसमैन, और वी कैन से बिजनेस आइडेंटिटी और द ओनर्स आइडेंटिटी इज डिफरेंट इन द बिजनेस. इफ द बिजनेसमैन इज, अगर बिजनेसमैन कंट्रीब्यूट करे तो उसका कंट्रीब्यूट लिखा तो जाएगा, लेकिन वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, हम लोग को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. मतलब जो भी हम डिसीजन लेंगे, वी हैव टू थिंक अबाउट द बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. एंड हियर इन द बिजनेस एंटिटी इट इज क्लियरली गिवन द message: business is different from the owner, and owner is different, have existence, or business have different legal existence. Okay, second important concept is money measurement. In this concept implies that only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in books of accounts. Earlier we have studied that only monetary transactions are recorded in books of account. So money measurement means only the money transactions, monetary transactions are recorded in the books of accounts, because money is a medium of exchange, and when the transaction is done it is expressed as money, and that transaction is recorded in the books. So transaction which does not involve money will not be recorded in books of accounts. So this concept gives only the monetary transactions are recorded in the books of account. Non-monetary transactions are not recorded in books of account. If we are purchasing goods, so we have to pay the amount, and that amount we have to record in books of accounts. समझा? Third concept is cost concept. An asset is recorded in books of accounts on the basis of historical cost, that is acquisition cost.
व्हेन मतलब कि वेन एवर वी परचेज द असेट, जब भी हम असेट परचेज करते हैं, सो दैट असेट इज रिकॉर्डेड द एक्विजिशन वैल्यू, एक्विजिशन वैल्यू मतलब परचेज वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द बेस फॉर द फर्दर अकाउंटिंग, और वो जो अमाउंट होती है वो हमारे लिए बेस अमाउंट होती है फॉर द फर्दर इवेल्युएटिंग। दैट मीन्स व्हेन वी परचेज द असेट, सपोज अगर हम लोग असेट परचेज कर रहे हैं 3 लाख रुपए का, ठीक है, अब तो 3 लाख रुपए हमारी क्या है, एक्विजिशन वैल्यू, क्या है, एक्विजिशन वैल्यू है। ऑन दैट 3 लाख वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन। देन आफ्टर, if we are following the straight line method, so we have to every year we have to calculate the depreciation on that amount, but the cost of value will be changing after the deducting depreciation. So it is recorded that at cost of time it is purchased, it is systematically reduced in the books of value by charging the depreciation. मतलब कि assets की वैल्यू क्या होती है, goes on decreasing होती है because of the depreciation. So cost concept क्या कहता है कि जब भी हम asset रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट पे हम लोग को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। जो परचेज वैल्यू है उस परचेज वैल्यू पे हम लोग को परचेज असेट्स के क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, any policy adopted by the accounting should be continuous or consistent throughout the business, and it need not be changed generally unless and until the circumstances demanded. मतलब if any in a organization if any policy is adopted, अगर कोई एक पॉलिसी अडॉप्ट की गई है, so that policy should be continuous and it should be consistent, कंटिन्यूएशन होना चाहिए थ्रू आउट द बिजनेस, वो चेंज नहीं होना चाहिए। इट कैन बी चेंज और इट विल बी चेंजेस अनटिल अनलेस, कब तक चेंज नहीं करना है, जब तक कि कोई ऐसी सर्कमटेंसेस नहीं आ जाए और जो डिमांड हो, जब तक कि हम लोग को क्या नहीं करना है, उस पॉलिसी को, उस डिसीजन को चेंज नहीं करना है। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। सो रेस्ट्रिक्शन टू फॉलो अकाउंटिंग पॉलिसीज, judgment errors, changes permitted, management decision, costing decision, accounting decision. These policies we have to make a consistency throughout the business, but if the circumstances arises, so we can change the policy or we can change the principle according to the situation demanded. See, understood what is consistency concept? मतलब कि एक पॉलिसी क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए जब तक कि कोई ऐसी सर्कमटेंसेस ना आ जाए, उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब व्हाट, कंजर्व मीन्स टू सेफगार्ड। सो दिस प्रिंसिपल सेज कि while recording the business transaction we have to anticipate no profit but provide all the possible losses. That means when we do the business, so we have to think about the losses. If the business suffer the losses, so in that case company should how to manage that loss from the secret reserve. So company should always make a secret reserve to make a provision of the prevention to make a prevention of the loss. So income statement shows the lower income and balance sheet over the assets. This policy of recording is taking the accountant to play safe while writing the books of accounts. कंजर्वेटिज्म का मतलब यही है कि कंपनी जब प्रॉफिट होता है तो उसमें से कुछ पार्ट असाइड करके रखना चाहिए एज अ रिजर्व। मतलब कि कभी इन केस फ्यूचर में अगर हमें लॉस हो तो हम क्या करें, उस लॉस को, उस जो हमने रिजर्व मेंटेन किया है फ्रॉम द प्रॉफिट, उस रिजर्व को हम लोग क्या करें, लॉस के टाइम पर यूटिलाइज करें और हम लोग सेव करके रखें। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म, है ना, यानी कंजर्व करके रखना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ वाटर आप लोगों ने सुना होगा। मतलब टू सेव, हम लोग क्या करना है, पहले ही से हमको प्रॉफिट पे थोड़ा थोड़ा बचा के रखना है कि कभी कंपनी को अगर लॉस होगा तो कंपनी क्या करेगी, उस रिजर्व में से अपने लॉस को भरपाई करेगी। समझा सभी को कंजर्वेटिज्म का मतलब। Next concept is going concern. It is the basic assumption that business is going concern and will continue its operations for future. Going concern concept influences the accounting practice in the relation to the valuation of assets and liabilities. Depreciation on fixed asset, treatment of outstanding and prepaid expenses, accrued and unearned revenue. These are the examples of going concern concept. इसका मतलब ये है कि बिजनेस जब सेटअप किया जाता है तो ये अजम्पशन से सेटअप किया जाता है कि इट विल कंटिन्यू फॉर द फ्यूचर पीरियड ओनली। कोई भी बिजनेस सेटअप करता तो ये इंटेंशन से सेटअप नहीं करता कि हम लोग 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे। उसका इंटेंशन होता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग क्या करे, बिजनेस करे, बराबर ना। तो उसी तरह से ये गोइंग कंसर्न का मतलब यही है कि गोइंग कंसर्न मीन्स बिजनेस शुड बी गोइंग और कंटिन्यू टिल द future date, and going concept influences the accounting practice in the relation of assets and liabilities.
Income is recorded only when it is realized. Either it is received or earned. Revenue are recorded only when sales are affected or services are rendered. Sales revenue are considered as recognized when the sales are affected during the accounting period, irrespective of the fact whether the cash is received or not. So realization concept says that it deals with the determination of the point of view whether in revenues are earned. मतलब हम लोग को ये पता है कि हमारा सेल हुआ है, भले हमको कैश अभी मिला है या मिलने वाला है बाद में, बट इनकम आने वाली है, दैट इज़ कॉल्ड द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. समझा कि हमने कोई गुड सेल किया है, वहाँ से हमको कोई इनकम अर्न होने वाली है, इनकम रियलाइज होने वाली है, दैट इज़ कॉल्ड रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. व्हेन वी सोल्ड एनीथिंग, when we do any activity for rendering services, or for earning money, or income is earned. Receive or not is not a concept. Income is earned. Whenever income is earned, that is called the realization concept. Next concept is accrual basis. What is accrual? Income is recorded when it is accrues, and expenses are recorded when it is accrue became payable. All expenses and revenue related to the accounting period are to be considered irrespective of the facts and revenue are received in cash or not, express or paid in cash or not. मतलब if the transaction is done in a credit basis, अगर transaction credit basis हो तो क्या हम उसको record नहीं करेंगे? क्या record करेंगे ना, तो उसे कहते हैं accrual basis. कि income हमने चाहे इनकम मिली हो या नहीं मिली हो, अर्न हुई है, एक्सपेंसेस पे किया है या पेबल करने वाले हैं, सो दैट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. दैट मीन्स एक्रूड ट्रांजैक्शन और द अक्रूवल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. दिस इज कॉल्ड अक्रूवल्स एंड द प्रीपेमेंट्स. अक्रूवल कॉन्सेप्ट इज अ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर अक्रूड. इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द अर्न और इनकर्ड एंड मनी नॉट रिसीव और पेड. यानी मनी रिसीव हुआ या नहीं होना उससे मतलब नहीं है. ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर आल्सो रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. Next is dual concept. Dual concept, as we have studied earlier, that Luca di Bargo Pelosi has introduced a double entry system. In that double entry system, we have seen every transaction has two effects. So under this dual aspect, according to this aspect, every transaction has two aspects. Two aspects, one is debit, another one is credit. So this concept says every transaction has a two effect, one is debit, another one is credit. The basic of this entire system of the double entry bookkeeping, and this concept we have to follow. Well, right, an equation of this is capital plus liability is equals to asset. We have to follow this. ठीक है, so under dual aspect we have to think each and every transaction has two effect, one is debit, another one is credit. Concept is disclosure concept. Under this concept, all the account details, all disclosed to all material information to all the concerned party related to the business. मीन्स जितने भी मेंबर्स हमारे बिजनेस में होते हैं उनको हमें सारी इन्फॉर्मेशन क्या करना है, शो करना है. एंड दैट इन्फॉर्मेशन शुड बी फेयर एंड फुल, एंड द नो इन्फॉर्मेशन should be kept as a secret from themselves. ठीक है, so financial position and the performance should be disclosed very honestly to the all user. Financial position means the balance sheet of the business, and the financial performance means the business result in terms of profit and losses, income and expenses in the profit and loss account. All this information should be disclosed to be relevant, reliable, comparable, understood by the all concerned authorities. So this disclosure concept says we have to give each and every information to each and every member with we have to give the reliable information, comparable information, and information should be correct, and honestly we have to provide each and every information to the person. Next concept is materiality concept. What is materiality? The term materiality is a subjective term in nature. Materiality depends on the amount involved in transaction. For example, size of business, nature of information, requirement of person making decision, or an item material to the person to be immaterial to be the another person. मतलब कुछ information किसी person के लिए materialistic होगी तो किसी के लिए नहीं होगी. So each and every information we have to be give by disclose to everyone and which influence to user. मतलब जिससे related होगी that information we have to show to them. According to this convention, financial statement should be disclosed all the material item which might influence the decision of the user of the financial statement. Any item which cannot be significant or it is not relevant to the user, so they need not to disclose in any financial statement. मतलब जो यूज़र को जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है उसको वही इन्फॉर्मेशन हमें क्या करनी है, प्रोवाइड करना है. अगर कोई पर्सन के लिए वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है तो हम उसको वो फॉर एग्जांपल अगर इंटरेस्ट का मैटर है तो इंटरेस्ट का मैटर किससे डील होगा, डिबेंचर होल्डर से और क्रेडिटर होल्डर से ही डील होगा. मतलब डिबेंचर होल्डर, बॉन्ड होल्डर और डिपॉजिटर से डील होगा, शेयर होल्डर से डील होगा नहीं, तो उनको वो इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है. अंडरस्टूड एवरीवन? This concept is matching concept.
According to this concept, revenue during an accounting period are matched with the expenses incurred during the period to earn the revenue during that period. This concept is based on accrual concept and periodicity concept. Periodicity concept fix the time frame, the measuring the performance and determining the financial status. मतलब ये कॉन्सेप्ट हम लोग को ये चेक करता है कि हमारे कितने एक्सपेंसेस है, कितने इनकम्स हैं, और इनकम और एक्सपेंस को बैलेंस करता है, मैच करता है कि अगर इनकम ज़्यादा है, इनकम अगर हमारे इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंसेस ज़्यादा है, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मैचिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं कि एक्रूअल बेसिस पे कितनी इनकम आने वाली है और एक्रूअल बेसिस पे हम लोग को कितना पेमेंट क्या करना है, पे करना है. सो दिस कॉन्सेप्ट विल हेल्प्स टू नो हाउ मच एक्सपेंसेस वी हैव टू पे एंड हाउ मच इनकम विल कम फॉर द बिजनेस. सो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ accountancy. Complete the accounting concept. We have studied the 12 accounting concept. After that we have accounting standard. That accounting standard and accounting standard very less important topic we can say, but I will explain in the live lecture. So here we complete a first chapter of accountancy, that is introduction of bookkeeping and accountancy. And I hope you understood this chapter. If you having any doubt and problem, so clear your doubt in a live session. Thank you so much for watching my video.